मुझे खांसी की दवा दो। अभी आप पहुंच गए फार्मेसी में। गिव मी द कफ मेडिसिन। नाउ यू आर राइट इनटू द फार्मेसी एट दिस मोमेंट। अतनी दवा लिलकहा। अतनी in English, give me dawa means medicine. Lil-kahha of cough. Of cough means medicine of cough. उर्दू में आतनी मुझे दो दवा मतलब दवा उर्दू में लिल-कहहा खांसी की दवा दो। क्या आपके पास एलर्जी की दवा है? Do you have allergy medication? You're asking to the pharmacist. عندكم دواء الحساسية in English. عندكم, do you all have دواء the medication or medicine الحساسية of the allergy? उर्दू में عندكم क्या आप सबके पास है दवाई अल-हसासिया खारिश की दवा, एलर्जी की दवा। मुझे नज़ला है, ज़ुकाम है। I have common cold. In common Arabic, आम अरबी में यूँ कहते हैं عندي ज़ुकाम, عندي I have ज़ुकाम common cold। उर्दू में عندي मुझे है और इसी का मतलब मेरे पास है। ज़ुकाम नज़ला, ठीक है। इमारात में कुछ इस तरह से कहेंगे। इन UAE they preferably say अना मुज़ज्जम, I am having common cold। उर्दू में मुझे ज़ुकाम है। दर्द, जिसम में दर्द हो ना, दर्द, pain in the body parts is known as alam, and the second word for this is, और जो दूसरा लफ्ज़ है दर्द का वो है वजा। मेरा सर दर्द कर रहा है, जो आम तौर पर करता ही रहता है भाई, बड़ी परेशानी होती है वीडियो बनाने में। My head is aching or I have headache। Alright? So to say that in Arabic it is يعورني رأسي. So it means يعورني, it's paining me, okay? رأسي, my head. يعورني, it's paining me. And what's it? رأسي, my head. Means my head is paining me, giving me ache. Alright? उर्दू में यअवरनी मुझे दर्द दे रहा है। रासी या रासी मतलब मेरा सर मुझे दर्द दे रहा है, मतलब मेरे सर में दर्द हो रही है, ठीक है। मुझे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। I have headache, okay. The other way to say this is عندي صداع, عندي मुझे है صداع सर का दर्द। صداع मतलब सर का दर्द, एक ही लफ्ज़ के अंदर। In English, عندي, I have صداع, headache. صداع is a single word that means, straightforward, headache. आपको किस चीज़ की शिकायत है? What are you complaining about? Okay. عن شو تشتكي؟ عن شو تشتكي? In English, عن شو of what تشتكي, you are complaining. उर्दू में عن شو किसके मुतालिक, तश्तकी आप शिकायत कर रहे हैं, किसके मुतालिक शिकायत कर रहे हैं, किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। और अगर आप किसी औरत ज़ात से, किसी खातून से मुखातिब हों तो आप क्या कहेंगे, अभी सीखेंगे। And if you are talking to a female, the wordings will change a little, which is عن شو تشتكين, عن شو تشتكين, عن شو تشتكين। मुझे बुखार की शिकायत है,
ये लो भाई, I complain of fever means I have fever. أشتكي من الحمى. أشتكي I'm complaining من الحمى of fever. उर्दू में अश्तकी मैं शिकायत करता हूँ मिन अल हुम्मा बुखार की शिकायत करता हूँ, ये शिकायत पाता हूँ अपने अंदर।